we have completed with annuity and insurance. Now long back we have seen sequencing, isn't it? We have seen management analysis के अंदर. Now see, under management analysis there are 3 topics included. The first is LPP, that is linear programming problem. Next is assignment problem, and the last is sequencing. Now, apart from this, we have studied with sequencing and we have studied with linear programming. Now, what remains is assignment problem. Now, assignment. The word itself suggests assignment means you have to assign. अब assignment means you have to assign, considering the companies, you have to assign certain jobs to certain persons who can do that job better than the other. Means particular person has, जैसे programmer है, एक program, 2 program, 3 programs, 4 program, there are 4 programs and there are 4 programmers. Now there are C. Programmers are A, B, C and D, and there are 4 programs, 1, 2, 3, 4. Now assign करना है मुझे कि this is programmer and this is the programmer. तो A को मैं C, this A takes A को first प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, सेकेंड प्रोग्राम कंप्लीट के लिए 5 आवर्स लगते हैं, इसको 4 आवर्स लगते हैं, इसको 1 आवर लगता है. नाउ 4 भी 2 है, 1 है, 5 है, 6. नाउ सी हियर, इसको 1, 3, 4, 8 एंड 3, 1, 3, 2, 5, 9. सपोज दिस इज. अब अगर मैं एक प्रोग्रामर को अगर सेकेंड जॉब असाइन यानी सेकेंड प्रोग्राम देती हूँ करने के लिए, then what will happen? He or she will take 5 hours. अगर लेकिन उससे अच्छा है अगर मैं प्रोग्रामर ए को 4th जॉब असाइन करूँ. अगर प्रोग्रामर ए को मैं 4th जॉब असाइन करूँ, then I will be in profit because he will complete that job in 1 hour only. Okay? B को मैं सेकेंड जॉब असाइन करूंगी या सेकेंड प्रोग्राम असाइन करूंगी. C को मैं 1 करूंगी और D को मैं अगर B और D में टाई है तो ये जो 3 बचा हुआ है. So this is called as assignment problem. Means you have to assign certain jobs to the persons who do that particular job better way, less time, isn't it? Now see, I will read the definition of assignment problem. The assignment problem is a special case of transportation problem in which a number of origins or resources are assigned to equal number of destinations. Equal number. 4 programmers and 4 jobs means equal destinations. So that the total cost is minimized or profit is maximized, isn't it? In this case, the profit, यानी जो time कम लगेगा, so the profit can be more. Then, thus the essential characteristic is as follows: n resources are to be assigned to n activities. N number of 4 number of programmers are to be assigned 4 jobs, such that each resource is allocated to each activity. यानी एक को एक एक्टिविटी मिलेगी, एक प्रोग्रामर को एक जॉब मिलेगा, and each activity is performed by only 1 resource. यानी ये जो सेकेंड जॉब है वो सिर्फ ए और ए ही करेगा. Okay, this is called as assignment problem. As such, we have done this by mere observation, but all the problems cannot be done by mere observations. So, for that, what is required? There are some steps or there are some methods to be followed for finding out of the assignment.
Now, Hungarian method for solution of assignment problem. Hungarian method for solution of assignment problem. A Hungarian mathematician D. Konia developed the most effective method for solving an assignment problem. Now, अब principles क्या है इस method के? I will read that. The objective of assignment problem remains unchanged if we shift the origin of elements of any row or column in the given cost matrix. As such, this is a matrix 4x4 matrix, isn't it? And the next is a solution having zero total cost is an optimum solution. Assumptions. अब इसको कुछ assumptions लेके चलना है. Each facility is capable of performing each task. ऐसा नहीं है कि A is not capable of performing first. Each is capable of doing each task. Only one task can be assigned to each facility. Any one of the job is assigned to programmer A. Any one of the job is assigned to programmer B. Now, the assignment matrix must be n by n sides. N by n sides का मतलब है square matrix. We have studied the types of matrices. In that we have studied square matrix. Square matrix means number of rows is equal to number of columns. 4x4 matrix हो सकता है, वो 3x3 हो सकता है, 5x5. But number of rows must be equal to number of columns. If any entry is missing, suppose 5 rows are there and 4 columns are there, in that case you have to prepare a dummy 5th column. वो कैसे करना है? I will tell you afterwards. Now, Hungarian methods की minimization case. अब minimization case क्या है और maximization case क्या है? We will study. Only first today we will study the steps what are at or we follow. Now, see here. Minimization case. You pay attention to this because as said it is a difficult chapter to understand, especially on online classes. Now, first step is select the smallest element in each row and subtract it from every element of the row. First step, see. Step 1. Select smallest element from each row and subtract it from every element of that row. अगर रो 1 लिया है, रो 1 में 1 एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो आप क्या करोगे? 1 को सारे नंबर में से सबट्रैक्ट करोगे. नाउ स्टेप 2. अब जो हमने रो वाइज किया, सेम वी हैव टू डू विद द कॉलम वाइज. नाउ इन रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, अब ये सब करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स होता है उसमें आपको क्या करना है? इन रिड्यूस्ड मैट्रिक्स सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम. नाउ रो होने के बाद ईच कॉलम and subtract it from every element of the column. Okay, these are the basic 2 steps which we have to do. अब step 3 है, in the reduced matrix. अब 1 में कुछ reduce होगा, 2 में reduce होगा. In the reduced matrix obtained from step 2, make a select a row with exactly 1 0 and make an assignment by closing this 0. अब ये जो आगे के स्टेप्स है वो जब मैं सम्स करूंगी तभी आपको पता चलेगा. सो टुडे वी विल सी ओनली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ओवर हियर. अब वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे है, अभी हो सकता है हम एक 2 सम्स ही ले हर लेक्चर में. ओके, नाउ आई विल रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट. द फॉलोइंग मैट्रिक्स shows the time in hours taken by 5 mechanics. अभी जैसे हमने प्रोग्रामर्स लिए थे, यहाँ पर 5 mechanics A, B, C, D and E
while working on 5 machines M1, M2, M3, M4, M5 in completing a certain job. कोई भी एक job है, there are 5 machines, there are 5 mechanics. How should the foreman assign the machines to mechanics? अब कौन सी मशीन कौन से मैकेनिक को देना so that the total time may be minimized. जहाँ minimized word आया, in that case you have to use the method of minimization. Understood? टोटल टाइम हमेशा मिनिमाइज रहता है, टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट भी मिनिमम, लेकिन टोटल प्रॉफिट विल कम अंडर मैक्सिमाइजेशन केस. ओके, नाउ पे अटेंशन केयरफुली टू दिस सम्स. सी, आई विल फर्स्ट राइट डाउन मैकेनिक्स एंड मशीन्स. Now there are 5 mechanics A, B, C, D and E, and there are 5 machines. I have already told it must be a square matrix. M1, M2, M3, M4, M5. अब A के लिए हम देखेंगे 1, 3, 2, 8, 6. Means on machine M1 it takes 1 hour. No. 2, 4, 3, 1, 5. Next is 5, 6, 3, 4, 6. For D it is 3, 1, 4, 2, 2. And for E it is 1, 5, 6, 5. Now see. First step ये आपका select the smallest element from each row and subtract it from every element of that row. Again we have, these are the very lengthy problems. See, A, B, C, D, E, M1, M2. हर बार आपको इस तरह के टेबल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं. M4, M5. Now first row will consider here. अब इस रो में which is the smallest element? 1 is the smallest element. अब 1 को सभी नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 minus 1 0, 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, 8 minus 1 7, 6 minus 1 1. Continue with row 2. Which is the smallest element of row 2? Again 1. So subtract it. 2 minus 1 1, 4 minus 1 3, 3 minus 1 2, 1 minus 1 0, 5 minus 1. Consider third row. Which is the smallest element of the third row? 3. Now subtract it. 5 minus 3 2, 6 minus 3 3, 3 minus 3 0, 4 minus 3 1, 6 minus 3. Now consider fourth row. 1 is the smallest element. 3 minus 1 2, 1 minus 1 0, 4 minus 1 3, 2 minus 1 1, again 2 minus 1 1. Now consider last row. 1 is the smallest element. Subtract it. 1 minus 1 0, 5 minus 1 4, 6 minus 1 5, 5 minus 1 4, 4 minus 1. Got it? This is the reduced matrix. Now for this reduced matrix, what you have to do? See, ऐसे आपको एक इसमें नहीं करने हैं. When different many columns you have to prepare for. Now, see, consider columns. हर एक कॉलम में से आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है. In this column, 0 is the smallest element. So no need to change. अगर आप 0 को माइनस करोगे, you will get the same. So what you will get here? 0. 1, 2, 2, 0. Now consider column 2. Again 0 is the smallest element. So no changes. 2, 3, 3, 0, 4. Now consider column 3. Again 0 is there. It is a rare case. ऐसे हर एक केस में नहीं होगा. 1, 2, 0, 3, 5. Here also same. 7, 0, 1, 1, 4.
Now consider last column. 1 is the smallest element. Subtract 1. 5 minus 1, 4. 4 minus 1, 3. 3 minus 1, 2. 1 minus 1, 0. 3 minus 2. Now again this is a reduced matrix. Now what is the third step? See. Now step 3. First step क्या किया हमने? Select the smallest element from each row and subtract it from every element. Next है select the smallest element from each column. अब third है start examining the zeros and select a row with exactly 1 0. Okay? अब exactly 1 0 में अब क्या करेंगे आप? देखो see exactly 1 zeros. यहाँ पे 2 zeros है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. Now the step is shown. Now similarly examine the remaining rows one by one. अब देखो इसको हम this is exactly 1. तो एक एक का एक एक ही लेंगे. This is exactly 1. This is exactly 1. This is exactly 1. अब यहाँ देखो. तो एक ही इसमें दो बार जीरोस आ गए, तो हम इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे और इसको भी कैंसिल करेंगे. Why we are cancelling this? Because we have already got 1 0 over here. Now cover all the zeros. और अगर आपको ये स्टेप नहीं समझी है then do at present ये मत करो. Okay, I will write it afterwards and show you. See. Now next step is cover all zeros by minimum number of horizontal and vertical lines. Horizontal and vertical lines. तो कवर करने हैं zeros. एक हो गया कवर. अब मैं इस तरह से भी कर सकती थी, लेकिन जब मेरा एक ही लाइन में 2 zeros कवर हो रहे हैं. Okay, next will be see. This is also I have covered. This or this also you can do. अब ये एक इसमें अब सारे zeros covered हो गए. Now next step will be A, B, C, D, E, M1, M2, M3, M4, M1. अब now see, minimum 4 lines are required to cover all the zeros. Minimum 4. ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं इसे. एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. लेकिन अब कम से कम लाइन्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा zeros कवर करने होंगे. So how many lines are there? 1, 2, 3, 4. And how many these things are there? Rows and columns 5. तो अभी भी हमारा solution निकल नहीं आया है. So one more step we have to follow. अब वो step क्या है? As the minimum number of straight lines connecting zeros is not equal to number of rows or columns, our solution is not reached. तो और एक step करनी है. अब वो step क्या है? ध्यान से सुनो. Select the smallest element from all the uncovered elements. अब देखो ये all these elements are covered, यानी लाइन से उसको कवर किया. तो जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है. आफ्टर सिलेक्टिंग दैट subtract it from all the uncovered elements and add it to the element which lies at the intersection of two lines. अब वो क्या है? अब ये अनकवर्ड, ये कवर्ड की तरफ मत देखो आप. See only the uncovered. 2, 1, 7, 4. Again 3, 4, 5, 4, 2. 8 elements are uncovered. अब इस 8 elements में से which is the smallest element? 1. अब 1 को आप इन सब में से subtract करोगे और add किसमें करोगे? उन elements में जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे. अब दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे कौन से है? ये इनमें आप ऐड करोगे. ओके, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेचारा कहीं भी नहीं है. आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो. 2 - 1 1, 1 - 1 0.
7 माइनस 1 6 4 माइनस 1। अब ये इंटरसेक्शन पे है, इसमें 1 को ऐड करना है 2। अब ये कवर्ड एलिमेंट्स को हाथ नहीं लगाना है, वो एज इट इज रहेंगे 3 2 0। अगेन इट इज एट द इंटरसेक्शन, ऐड करो 3, कवर्ड को कुछ भी मत करो। अगेन ये दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे ऐड करो 3 0 3 1 0। ये 0 एज इट इज रहेगा। अब इसमें से 1 को सबट्रैक्ट करना है 3 4 3, गॉट इट। अब हम जीरोस देखो, ये रो में दो, ये कॉलम में 2 जीरोस हैं। अब एक तो अगर मैं ये 0 लेती हूं, ये 0 को अगर मैं ब्लॉक करती हूँ, मुझे एक कॉलम में और एक रो में एक ही 0 चाहिए, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अब सेकेंड कॉलम में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही 0 है, तो मैं इसको कवर करूंगी। थर्ड रो में मेरे पास दो ऑप्शन, कॉलम में मेरे पास 2 ऑप्शन है 0 के, ये और ये, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। और मैंने क्या कहा, एक रो में एक ही 0 को कवर होना है, दूसरे को अनकवर होना पड़ेगा, या एक रो में एक ही को ब्लॉक होना। तो अगर मैं इसको ब्लॉक करती हूँ तो इसका क्या करूंगी? ओके, सो मैं इसको कर देती हूँ कैंसल, तो मुझे ब्लॉक किसको करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट, सॉरी ये नेक्स्ट क्या होगा बताओ? ये, या फिर अभी हमें क्या करना है, ये हमने कर दिया। अभी तक हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है कि नहीं आया है देखो। अब हम कवर करेंगे इसको, 1 हो गया कवर, ओके। अब ये इसको एक कवर करेंगे 2 3। अभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकला है क्या? नहीं निकला। सी 1 2 3 4, 1 minute. I will write the steps again so that you will understand. I will drop this and make again. Okay, now see. A, B, C, D, E. M1, M2, M3, M4, M5. मैं डायरेक्ट रिड्यूस मैट्रिक्स से लिखती हूँ 0 2 3 3 0 1 3 3 0 3 0 2 0 3 4 6 0 1 1 3 3 3 2 0। अब पहले इन दोनों को कवर कर लेती हूँ, ये हो गया एक पार्ट मेरा। अब देखो इसमें भी मेरे 2 जीरोस आ रहे हैं, इसमें भी मेरे 2 जीरोस आएंगे। अब इसमें एक और 0 लाती हूँ, या फिर ऐसा करती हूँ मैं, देखो ये लाइन में मेरे 2 जीरोस आ गए। अब इसमें भी एक लाइन, अब मैं यहाँ एडिशनल ना लाते हुए एक, अब देखो कितने लाइन्स आ गए, 1 2 3 4। अगेन आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट रीच्ड, वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन। A B C D E C, this one is 9। अब इसको मैं नहीं लेती हूँ बिकॉज मेरा ये 0 ऑलरेडी इस लाइन से कवर हो चुका है, तो मैं बार बार इसको डबल लाइन्स नहीं लूंगी। नाउ व्हाट विल बी देयर? M1 M2 M3 M4 M5। Now same procedure, uncovered elements, see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uncovered elements। अब uncovered elements के सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे और उसको इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स में ऐड करेंगे। अब 1 2 3 what are them? Next 3 1 2 और 3 3 1। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1। 1 को पहले सबट्रैक्ट करो, ये 0 एज इट इज रहेगा।
1 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ये भी 0 हो जाएगा, इसको हाथ मत लगाओ, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 5 बन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बन जाएगा। अब जो इंटरसेक्शन लाइंस पे है उसमें ऐड करना है, ये 3 हो जाएगा, ये अब देखो 3 है, ये 3 में से हम इसको कवर्ड है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, 2 0, और ये इंटरसेक्शन पे तो इसमें से सिमिलर ऐसे करते जाएंगे, ये इंटरसेक्शन पे है तो ये सॉरी दिस इज नॉट कवर्ड, सो ये एज इट इज रहेगा 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 1 2, ये 0 है, 0 का 0 ही रहेगा, कुछ नहीं, 1 minus 1 again it will become 0, 2 minus 1 will become, अब ये इंटरसेक्शन पे है 3 plus 1 4 will be there, ये 0 as it is रहेगा, ये 3 as it is रहेगा, ये सॉरी 3 अगेन इट इज इंटरसेक्शन में 4, ये 1 as it is रहेगा, ये 0 as it is रहेगा, ये 0 कवर्ड नहीं है तो ये 0 रहेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 1, ये 2 हो जाएगा, ये कवर्ड है, इसको हाथ मत लगाओ, अनकवर्ड 2, 1 minus 1। आप देखते हैं कि हर एक को एक एक जॉब असाइन हुआ है कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ब्लॉक करूँ तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। Why I can't take this? Because ये ऑलरेडी 2 है, 0 है। अब इसका मैं अगर ये 0 लेती हूँ तो मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा, बट कैन आई टेक दिस? नो, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर 2 zeros हैं, isn't it? तो देखो मैं क्या करती हूँ, इसको क्रॉस कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ ब्लॉक। अब मुझे बताओ ये ब्लॉक करूँ कि ये ब्लॉक करूँ? अगर मैं ये ब्लॉक करती हूँ तो ये 0 वाला है, तो मुझे बट नेचुरली इसी को ब्लॉक करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। 2 है इसमें भी, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्लॉक कर चुकी हूँ मैं इस रो में, हर एक रो या हर एक कॉलम में एक ही आना चाहिए। अब ये कॉलम में 2 दिख रहे हैं मुझे, तो ये करूँ कि ये करूँ? ये किया तो यहाँ ऑलरेडी एक ब्लॉक किया हुआ है मैंने, गॉट इट? नाउ द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स A, B, C, D, these are the mechanics और मशीन्स। अब हर एक मैकेनिक को कौन सी मशीन दी जाएगी? अब देखो, A को मशीन M1 दी जाएगी, B को मशीन M4 दी जाएगी, C को मशीन M3 दी जाएगी, D को मशीन M2। अब बची हुई जो है, अब देखो हर एक को एक एक ही मिल रही है, isn't it? अब हम देखते हैं कि टाइम कितना मिल रहा है। अब A को M1 पे कितना टाइम लगता है, देखो आई थिंक इट इज 1। नाउ B को M4 पे अगेन 1, C को M3 पे 3 आवर्स लग रहे हैं, D को M2 पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, और E को तो टोटल आवर्स कितने हैं? 1 + 1 2 + 3 5 6 + 4। यहां तक आपको लाना है प्रॉब्लम ऑफ 4 मार्क्स। ओके, नाउ छोटा प्रॉब्लम लेंगे हम ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, सी वन मोर सॉन्ग वी विल डू। अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट has 4 jobs A, B, C, D which can be manufactured on each of the 4 machines. Processing cost minimum चाहिए। Now pay attention here। देखो एक सम में आपको नहीं समझ में आएगा, 2 सम्स जैसे जैसे आप सम्स करते जाओगे आपको समझ में आएगा। Now jobs processing cost on machines P, Q, R, S. Jobs are A, B, C, D. Processing cost है 31, 25, 33, 29, 25, 24,
23, 21, 19, 21, 23, 24, 38, 36, 34, 40. Same procedure again. Now फर्स्ट स्टेप, हर एक रो में से आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेना है. सो आवर रिड्यूस्ड मैट्रिक्स विल बी P Q R S, which is the smallest element here? 25. 25 को सब में से subtract कर दो. 31 minus 25 is 6. 25 minus 25 0. 33 minus 25 8. 29 minus 25 is 4. Now consider row 2, which is the smallest element in row 2? 21. Subtract it. 25 minus 21 4. 24 minus 21 3. 23 minus 21 2. 0. Now come to column 3. Smallest element is 19. 19 minus 19 0. 21 minus 19 2. 23 minus 19 4. This is 5. Now come to row 4. Which is the smallest element? 34. Subtract it. 38 minus 34 4. 36 minus 34 2. 0 6. Now what is the next step? हर एक कॉलम में से आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है और सबट्रैक्ट करना है. फर्स्ट कॉलम में 0 है, नो चेंजेस, इट विल रिमेन एज इट इज 6 4 0. कॉलम 2 में देखो 0 is the smallest element. 0 3 2 2. Column 3 में again 0. 8 2 4 0. Column 4 में सिर्फ दो you know that ये 0 0 ही तो है, तो वापस क्यों करना है? That is not the case. उनको सारे steps दिखने चाहिए. Then and then only you will get the marks. Got it? अब हो गया ये. Now we will try to cover the zeros. Okay, अब 1 2 3 4. आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से. Got it? Now how many lines are required to cover the zero? 1 2 3 4. And how many rows or columns are there? That are also 4. Means here the optimal solution is reached. पिछले सब में क्या था? ये जो कवर लाइन्स थी वो कम थी रोज और कॉलम में से, तो हमें इसलिए वो एडिशनल स्टेप्स करने पड़े. बट यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स is equal to the number of rows or columns, hence the optimal solution is reached. Okay, now A B C D P Q R S. अब फिर से आपको ये मैट्रिक्स लिखना है. 6 0 8 4 4 3 2 0 0 2 4 5 4 2 0 6. स्टार्ट करती हूँ मैं. फर्स्ट कॉलम में तो कोई 0 नहीं है मेरे पास, लेकिन थर्ड रो में है और 0 है, तो ये मैं ब्लॉक करती हूँ. मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. इसमें भी एक ही है तो अगेन नो ऑप्शन. यहां पर भी. और नाउ ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? A B C D. These are the jobs and machines और प्रोसेसिंग कॉस्ट. अब A को आप कौन सा दोगे? Q. B को S. C को P. और D को. Okay, now the last one we have seen. अब A को मशीन के लिए एक जॉब को मशीन क्यू पे कितना टाइम लगता है? देखो 25. So I will write here 25 first. B को मशीन S पे 21. C को मशीन P पे 19. D को मशीन R पे 34. Add them and you will get the answer. Okay, such 3-4 problems we will see in the next lecture. ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, इसको ही आप प्रैक्टिस करके देखो. ओके.